अस्सलाम वालेकुम। मैं इस टाइम मौजूद हूँ न्यूयॉर्क के वर्ल्ड फेमस सेंट्रल पार्क में और अभी इसकी एक एंट्रेंस पे मैं खड़ा हूँ और आप इसमें देखें कि इसकी एंट्रेंस कितनी अट्रैक्टिव और खूबसूरत है। यहाँ जो सेंट्रल पार्क न्यूयॉर्क का है ये वर्ल्ड फेमस है। यहाँ पूरी दुनिया से विजिटर्स इसको विज़िट करने के लिए आते हैं, इसको इंजॉय करते हैं। तो मैंने सोचा कि इससे पहले कि मैं ये पार्क का आपको इनडोर विज़िट करवाऊँ, उससे पहले आपको इसकी सराउंडिंग ज़रा दिखा दूँ। आप अगर मेरी बैक पे देखें तो ये आपको किसी वक्त में इंडिया में जो मैन रिक्शास चलते थे, ये रिक्शास यहाँ मौजूद हैं जिनको ये लोग टूर के लिए इस्तेमाल करते हैं और अगर इसके लिए मुख्तलिफ डेस्टिनेशन जो टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं वो दिखाते हैं। या आई विल डू इट आफ्टर सम टाइम्स। सो व्हाट इज द टोटल राइट? डू यू माइंड इफ आई पुट यू ऑन द यूट्यूब? नो प्रॉब्लम। सो कैन आई गेट योर नेम? My name is Alf Jab. And where are you from? I'm from West Africa. West Africa. Hi. Yeah. So say hi to them. Hi guys. How is everything? Yeah. So what is the normal charges to take around for the old Central Park? Yeah. So we got different rides for you. So after we take you and then you for it. Yeah, I will try to in some time to just keep the videos finished as soon as possible. So I'll like. So what is the normal fare that you charge from the people who come Yeah, around? like if you do like 1 hour probably like 185. Yeah. Right there. और व्यूअर्स, इससे पहले कि मैं इनसे फेयर्स की बात करूं तो मेरी बैक पे आप एक बस देख सकते हैं। ये बस जो चल रही है ये विजिट्स करवाती है लोगों को अराउंड द सिटी। सो लो लेट्स कम बैक टू आवर पिट। Yeah. So we got prices for you. So 1 hour we got like. Can I sit? Just to make sure. Yes, please. Yeah, 1 hour we got 1 hour. Okay. You know, so we got 4 stuff. Like 4 stuff. And what are those things called? like we got boundary range, boundary. सेंट्रल पार्क के अराउंड अगर आप देखें तो यहाँ आपको बहुत ज़्यादा खाने पीने की कार्ट्स नज़र आएंगी और वहाँ वो लोग जो विज़िट करते हैं और अगर अचानक उन्हें मोमेंट्री भूख लग जाती है तो वह आपकी भूख बता सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको चाहूँगा कि यहाँ पर स्काई स्क्रैपर्स बिल्डिंग्स मेरे बैक पे आपको नज़र आ रही हैं जो कि इस प्लेस को और ज़्यादा अट्रैक्टिव और लुक्रेटिव बनाती हैं। सी दिस, अगर मैं आपको दिखा सकूँ, ऑल अराउंड हियर यू कैन सी a lot of buildings which enhance the beauty of Central Park. इसके अलावा देखिए स्टेट ऑफ न्यूयॉर्क ने कोविड-19 टेस्ट के लिए यहाँ पे फ्री फैसिलिटीज़ खासकर उन लोगों के लिए जो कि ट्रैवल कर रहे हैं। मैं भी कुछ दिनों में ट्रैवल करना चाहूँगा वापस, तो मैं यहाँ से या कहीं भी जो कि स्टेट ने जगह जगह कोविड-19 की फैसिलिटीज़ दी है लोगों को और ये मैं आपको बताऊँ कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, चाहे वो CVS से करवाएँ। कुछ पॉइंट्स पे आपको यहाँ अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है और कुछ जो है वो एब्सोल्युटली फ्री है। नॉट येट प्लीज। कुछ आपको यहाँ से फैसिलिटीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती हैं और इट्स अ लवली प्लेस टू विजिट एंड द एटमॉस्फियर इज क्वाइट नाइस एंड प्लेजेंट इवन दो इट्स सनी बट पीपल आर एंजॉइंग अराउंड। ये जो सेंट्रल पार्क का स्क्वायर है इसके अंदर देखिए मेरे बैक पे आपको और अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स नजर आएंगी। तो बाकी बात आपसे करता हूँ सेंट्रल पार्क के अंदर जाके विजिट करने की।
come to New York and you do not come to Central Park, mind you are going to miss a lot. But as I told you earlier, that it's also what I personally think, it's not possible to visit the whole park in one day. I might be wrong that I have seen so many people who just take a long road trip. But unfortunately what I personally think, कि आपको अगर इस पार्क को सही मानों में एक्सप्लोर करना है तो आप उस तरह इसको विजिट करें जिस तरह मैं विजिट कर रहा हूँ या जिस तरह मैं विजिट करने की कोशिश कर रहा हूँ नियत में। एक और खूबसूरत चीज़ जो मुझे इस पार्क में बहुत अच्छी लगी वो है यहाँ रॉक वर्क। या मे बी आई एम नॉट अ जोग्राफिकल एक्सपर्ट, लेकिन अगर आप देखें तो इन दरख्तों के बीचों बीच ये आपको छोटी छोटी हिल्स कहना चाहिए या माउंटेन्स कहना चाहिए, ये छोटी छोटी इन्होंने बना दी, इसलिए सिर्फ इसको एक नेचुरल टच देने के लिए। और ये आपको जगह जगह नजर आएगी ताकि विद इन द ट्रीज आपको एक एहसास मिलता है कि आप नेचर के बिल्कुल करीब हैं। और वहाँ जब आप जहाँ जहाँ आपको जाएं आपको यू फाइंड द होल प्लेस covered in greenery. It's very near to nature and you enjoy. Hi, I'm just taking a vlog. Yeah, thanks. So the feel that most of the people get when they come here is that this place brings them closer to nature. Maybe wherever you live, you see the beauty of the trees. It's hard to find maybe the place where you live. So see, it's all in one. और इसके अलावा इस पार्क में आपको जिस तरह मैंने पहले बताया कि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए जगह जगह स्पॉट्स बने हुए हैं, वेदर इट इज़ बैडमिंटन, टेनिस या सी मैं आपको दिखाता हूँ कि वी फाइंड द लिटिल एंजल्स प्लेइंग इन द फाउंटेन्स एंड सम ऑफ द एडल्ट्स मे ऑल्सो जॉइन देम. This is just a very short tour that I can give it to you. While walking on the place, I hope कि आपको एक closer look मिली होगी कि how does Central Park look like. But unfortunately, I regret for the thing. You know, just imagine कि it's winters, सर्दियाँ हैं और सर्दियों में आप इसको विजिट कर रहे हैं. तो आपको पाकिस्तान की, इंडिया की, बांग्लादेश की विंटर्स याद आ जानी चाहिए. मे बी जनवरी, दिसंबर, जस्ट टू एंजॉय द प्लेस. सी दिस पिजन. ये सब कुछ विजिट करते हुए मुझे याद आ गया कि बैचलर्स में हमने एक पोएम पढ़ी थी, विलियम डेविस की थी शायद, लेजर. व्हाट इज दिस लाइफ इफ इट्स फुल ऑफ केयर, वी डोंट हैव टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर. सो ये बिल्कुल एग्जैक्टली शायद गोरों ने या अमेरिकन्स ने इस बात को रियलाइज किया हुआ है. And they have provided the facilities so that people could stand and enjoy the leisure time if they can find it, because it's hard to even imagine in the places where we live. यहाँ आपको roofs नजर आएंगे. Such a nice place, I must say. Such a nice place. अभी फिलहाल मैं I'm trying to find an exit
बिकॉज यहाँ से एग्जिट मारूंगा और फिर किसी और प्लेस की तरफ जाऊंगा और आपको किसी और चीज़ का विजिट कराऊंगा। और आई थिंक आई एम गोइंग टू टेक सम टाइम टू अपलोड दीज वीडियोज टू यू गाइस, लेकिन मीनवाइल आई एम जस्ट सेविंग देम इन माय मोबाइल। हम आपको एक बात बता दूं कि व्हाट अ ब्यूटी ऑफ द ट्रीज। यहाँ आपको एक बात बता दूं कि न्यूयॉर्क में, बल्कि न्यूयॉर्क क्या पूरे यूएस में, आप नेचुरल सीन्स, नेचुरल ब्यूटी और कोई भी जो ऐसी चीज़ है जिसको आप फिल्म कर सकते हैं और आपको अलाउ है। लेकिन अगर आप किसी पर्सनालिटी को यहाँ फिल्म करते हैं, देखिए ये स्केचेस, हैंड स्केचेस की एक छोटा सा पॉइंट है जहाँ लोग विजिटर्स अपनी स्केचेस बनवाते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि यहाँ अगर आप आते हैं और आप ये चाहते हैं कि आप वीडियो बनाएं, व्लॉग्स बनाएं, तो आप किसी की पर्सनालिटी को, किसी शख्स को, किसी लेडी को, किसी बच्चे को उसकी इजाज़त के बगैर उसकी फिल्म नहीं बना सकते, क्योंकि इट्स नॉट अलाउड, इट्स अनएथिकल। वैसे भी जैसे कि हमारे कंट्री में होता है, हमारे कंट्री में समटाइम्स अनइंटेंशनली लोग बना होते हैं, और ये मैं आपको बताऊं, दिस इज नॉट एन एक्सेप्शन ओवर हियर एज वेल। आई हैव सीन पीपल दैट they keep on making movies on their mobile phones, and it involves sometimes the people around them. लेकिन एथिकली मैं आपको बताऊं कि ये शायद गलत है और उससे अवॉइड करना चाहिए। देखिए ये एक रोड है। अब मैं जिन लोगों को मूवीज में अपने, अगर आप देख सकते हैं, तो वो सिंपली एक मोमेंट के लिए आते हैं मेरे लोग। मैं किसी से उस हिसाब से, अगर किसी से ये देखिए साइकिलिंग के लिए लोग कर रहे हैं, अगर किसी को मेरी मूवी में, अपने ब्लॉग में मैं शामिल करता हूँ तो मैं उनकी इजाज़त देता हूँ। लेकिन ये लोग जो कि सिर्फ कुछ मोमेंट्स के लिए आते हैं, ये सिंपली दे गिव यू अ वेरी माइन्यूट जेस्चर और समथिंग। ये वो रोड है जो कि सेंट्रल पार्क से कनेक्ट करती है रिक्शास को। ये देखिए रिक्शा आ रहा है, सम अफ्रीकन गाय giving a tour to the visitors, and they also work as the tourist guide. They keep on telling you what is important, what is famous, and to a certain extent they give you a lot of help about these things. Okay.